अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल NFI तंगी। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था पाइथन की कुछ प्रोग्रामिंग्स। टुडे वी हैव टू स्टार्ट प्रैक्टिकल वर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है राइट अ स्क्रिप्ट टू डिस्प्ले हेलो वर्ल्ड ऑन कंसोल। सो वी हैव टू स्टार्ट पाइथन प्रोग्राम। ठीक है जी। एंड इन पाइथन प्रोग्रामिंग द फर्स्ट वन प्रोग्राम इज राइट अ स्क्रिप्ट टू डिस्प्ले हेलो वर्ल्ड। Now we have to write a program simply print hello world। ठीक है जी। जो भी चीज आप प्रिंट करना चाहते हो simply write the print function। ओके जी। सेकंड हमारे पास है the electricity bills for the last 3 months have been this and this and now you have to find the average of this। ओके जी। Now we have to find the average of given 3 months, so x equal to 23,000 plus 32,000 and plus 64,000। हमारे पास 3 months का बिल है। now y equal to x by 3, क्योंकि एवरेज फाइंड करने के लिए हमने जस्ट एड अप एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ मंथ्स एंड फ्रेंड y। ठीक है जी। तो हमारे y में क्या है, एवरेज ऑफ दैट वैल्यू। सो दिस इज द एवरेज ऑफ 3 मंथ्स। तो ये हमारे पास 3 वैल्यूज है और 3 वैल्यूज की हमने क्या कर दिया, एवरेज फाइंड कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ स्क्रिप्ट टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्कल एंड दिस इज द फार्मूला। सो वी हैव टू इंपोर्ट मैथ एंड आफ्टर दैट वी हैव टू डिक्लेयर द रेडियस ऑफ द सर्कल। So radius equal to 5 and now area equal to mat dot pi steric radius which is equal to 5 and radius steric power 2 है हमारे पास, pi r square is the formula। So now we have to print area of the circle is area which is stored in the area variable or the area of the circle is this। तो ये हमारे पास क्या है, रेडियस पाइप का, सर्कल का क्या है, एरिया है। Write a script that count all letters, digits and special symbols from given input string। हमें एक इनपुट स्ट्रिंग दिया गया है और इसमें हमने डिजिट, सिंबल्स एंड कैरेक्टर्स फाइंड करना है। सो वी हैव टू स्टार्ट पाइथन प्रोग्राम। ओके जी। फर्स्ट ऑफ ऑल इनपुट स्ट्रिंग एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लो जिसमें हमारे पास वो स्ट्रिंग होगा। नाउ वी हैव टू डिक्लेयर वेरिएबल्स फॉर लेटर्स, characters and symbols। so letters equal to 0। now initialize second variable digits equal to 0 and last में हम डिक्लेयर करेंगे थर्ड वेरिएबल symbols equal to 0। ठीक है जी। हमारे पास ये 3 वेरिएबल्स है। now we have to start our loop। so for this app for character in input strings, input string में देख लो क्या, character CHAR denoted character। if CHAR dot is alpha, अगर CHAR में हमारे पास अल्फाबेट है, so increase the letters variables with 1, letters plus equal to 1 या letters equal to letters plus 1 and elif, अगर CHR में हमारे पास letters नहीं है and CHR dot is digit, अगर ये digits है string में then digits plus equal to 1। ओके जी। एंड लास्ट में हमारे पास है एल्स, अगर ये दोनों नहीं है देन
क्या कर लो, symbols plus equal to 1. So now we have to print these characters, letters and digits. For that purpose, write print functions, and x is that one variables. For example, for letters, x is the letters variables. So number of letters will be appears in this line, ठीक है जी, which is 8, and prints number of digits. डिजिट्स कौन सी वेरिएबल में स्टोर है हमारे पास, डिजिट्स में. सो प्रिंट डिजिट्स, एंड द लास्ट वन इज symbols. Print number of symbols is so x is the symbols variable. ठीक है जी. तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम था जिसमें हमने एक इनपुट स्ट्रिंग दिया गया है और इसमें हमने डिफाइन किया है कि इनपुट स्ट्रिंग में नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, डिजिट्स कितने हैं एंड नंबर ऑफ सिंबल्स कितने हैं. ठीक है जी. ये पाइथन का एक सिंपल सा प्रोग्राम था जो हमारी एक्सरसाइज का पार्ट है. राइट अ स्क्रिप्ट टू चेक वेदर अ नंबर एंटर्ड बाय यूजर इज इवन और ऑड. We have to write a Python program to check either the given number is odd or even. For that purpose, we have to firstly declare a variable, namely num equal to float into input, enter a number. ये क्या करेगा, यूजर से एक नंबर क्या करेगा, लेगा. यूजर एक नंबर एंटर करेगा, फॉर एग्जांपल 28. अब हम चेक करेंगे कि इट इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट. सो वी हैव टू राइट अ कंडीशन इफ नम मॉडुलस 2 इक्वल टू 0. ठीक है जी. अगर ई डिविजिबल बाय 2 है देन सिंपली प्रिंट अ स्टेटमेंट नंबर. नम में क्या है, हमारे पास जो वेरिएबल है जिसमें हमारा गिवन नंबर स्टोर है. द गिवन नंबर इज डिविजिबल और इवन. द गिवन नंबर इज इवन बिकॉज इट इज डिविजिबल बाय 2. एल्स अदरवाइज प्रिंट द गिवन नंबर इज ऑड. तो अगर ई कंडीशन ठीक है तो हमारे पास क्या कर लो, ऑड. So 28 is even. अब फॉर एग्जाम्पल मैं वही प्रोग्राम दोबारा रन कर देता हूँ. यूजर एक नंबर एंटर करेगा, लेट से 35 है. अब ये कंडीशन चेक करेगा इफ नंबर डिविजिबल बाय 2 देन सिंपली प्रिंट आउट इट इज इवन नंबर. एल्स अदरवाइज प्रिंट आउट दैट द गिवन नंबर इज नॉट divisible by 2. It means that it is odd number. So 35 is not divisible by 2, then definitely it will display 35 is odd. इस वाला कंडीशन रन हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन 8. राइट अ स्क्रिप्ट टू चेक whether a number is divisible by 7 or not. हम क्या चेक करेंगे, divisibility of a number by 7. सो सिंपली मैं वही पुराना कोड जो है मॉडिफाई करता हूँ. एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लो, फिर यूजर एक नंबर एंटर करेगा. अब हम चेक करेंगे इफ अ नंबर मॉडुलस 7 इक्वल 0, it means that it is divisible by 7. Then simply print out number is divisible by 7. ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर हमारे पास 0 आया है तो ई डिविजिबल बाय 7 है. एंड एल्स राइट द एल्स स्टेटमेंट. अगर ई कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर द गिवन नंबर इज नॉट डिविजिबल
इज नॉट डिविजिबल बाय 7। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारे पास नंबर 34 है एंड 34 इज नॉट डिविजिबल बाय 7। ठीक है जी, तो ई एल्स का जो है लूप एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमारे पास ई स्टेटमेंट डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये हमारा प्रैक्टिकल वर्क था। क्वेश्चन 9, राइट अ स्क्रिप्ट टू टेक स्कोर फ्रॉम अ यूजर बिटवीन 1 and 100 and display its grading according to score 1 up to 50, 51 up to 70 and last 71 up to 100, and label these with different labeling. Okay, first of all we have to declare variables and take input from users. यूज़र क्या करेगा, वैल्यू एंटर करेगा फ्रॉम 1 to 100, 1 और 100 के दरमियान स्कोर होगा, अदरवाइज स्कोर जो है एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर लेते हैं, स्कोर इक्वल टू एंटर इनटू इनपुट। अच्छा जी, एंटर योर स्कोर बिटवीन 1 and 100। अच्छा जी, तो यूज़र क्या करेगा, एक स्कोर एंटर करेगा बिटवीन 1 and 100। फॉर एग्जांपल 88 में एंटर कर देता हूँ। तो अब जो है हम इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ स्कोर लेस देन 1 और स्कोर ग्रेटर देन 100, अगर इसके अलावा कोई वैल्यू है 1 up to 100, then simply display a message print invalid score, क्योंकि हम जो है स्कोर क्या है 1 and 100 के दरमियान एंटर करेंगे। प्लीज़ एंटर वैल्यू बिटवीन 1 and 100। तो सिंपली एक मैसेज डिस्प्ले होगा कि प्लीज़ एंटर वैलिड नंबर दैट इज़ फ्रॉम 1 to 100 एंड एल्स अगर 1 and 100 के दरमियान वैल्यू है तो इधर हम अब मुख्तलिफ कंडीशन लगाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 1 and 50 के दरमियान हमारी वैल्यू है, इफ स्कोर greater than or equal, if score less than or equal to, greater than 1, if score greater than 1 and score less than or equal to 50, अगर स्कोर हमारे पास 1 and 50 के दरमियान है, then simply print out that, उधर कंडीशन लगाया था कि अगर ग्रेड हमारे पास 1 and 50 के दरमियान है, then simply display a message average। ठीक है जी, एंड if अगर स्कोर हमारे पास ग्रेटर देन 50 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 51 एंड स्कोर लेस देन और इक्वल टू 70, अगर हमारे पास 51 से लेकर 70 तक हमारा गिवन नंबर है, देन डिस्प्ले अ मैसेज दैट इज़ गुड। तो फिर हमारे पास ग्रेड में क्या डिस्प्ले कर लो, गुड। ये हमारे पास सेकंड कंडीशन था एंड लास्ट में हम एल्स स्टेटमेंट लगाएंगे। अगर ई नहीं है तो फिर क्या कर लो, ग्रेड इक्वल टू एक्सेलेंट। अच्छा जी, चूँकि हमने 88 दिया है वैल्यू, तो हमारे पास स्कोर वेरिएबल में 88 वैल्यू है एंड सिंपली प्रिंट यूर ग्रेड इज, ठीक है जी, एक्सेलेंट। ठीक है, क्योंकि हमारे पास वैल्यू 88 है एंड 88 हमारे पास एक्सेलेंट कैटेगरी में आते हैं। तो ओके व्यूअर्स, विश यू बेस्ट ऑफ लक।